Good morning, children. Good. I hope everyone is fit and fine. Now, children, this was the revision that we had done previously. I had given you the test. Now, I'm going to discuss the answers with you, okay? Because I have seen that many people, many children are getting confused, okay? तो हम इसको पहले एक बार देख लेते हैं. Let us see this. Now, the first question is the words long and short tell us the dash of an object, right? So, what are you going to put? Now, the four option is height. Now, you remember for height, what were the words? Tall and short. तो ये तो गलत है. Next is length. Length के लिए yes, long and short they tell us the length of an object. This you have to learn, right? Now, next में देखिए. The second question is choose the image which is arranged correctly from shortest to tallest. So, आप क्या करोगे? You will see all the pictures carefully. You will see all the pictures and you will see whether they are arranged properly or not. Right? Now here you have one small then tall हो गया. So this is the wrong, right? You will see all the images. So in this the answer is option 4. As you can see, it is arranged height wise. Now next, the words wide and narrow tell us the dash of an object. Remember the poem? Yes. Big and small tell us the size, right? Long and short tell us the length. Tall and short tell us the height. Wide and narrow tell us the width. Right? Now, let us see the next question. So, there are three hammers. Now, there are numbers 1, 2 and 3. Now, here the question is hammer 1 is the dash. Right? So, we have the option longest, longer, shortest, shorter. Now, if you can see hammer 1, तो आपको realize हो जाएगा that this is not big, right? It is not the longest one. So, what am I going to write? Longest तो नहीं होगा, longer भी नहीं होगा. What it will be? Shortest या shorter? Now, this is the confusion that most of the children have, right? Now, बच्चों please remember if in the question there is only one object, जैसे नंबर 4 में एक ही ऑब्जेक्ट है ना हैमर 1, राइट? तो आप कौन सा EST जिस वर्ड में लास्ट में देर इज EST वही वर्ड चूज करोगे आप. सो द आंसर विल बी शॉर्टेस्ट नॉट शॉर्टर. Okay, please remember. So the answer will be shortest. You will see the question. Okay, अगर sentence में if in the sentence there are two words then you will be writing shorter, but यहाँ sentence में there is only one word hammer 1 और वो सबसे छोटा है. So I am going to write the word shortest not shorter. Please remember. Now see the next question. Hammer 2 is dash than hammer 3. Now here in the sentence if you can see there are two words, है ना? दो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे hammer 2 and hammer 3. जब दो ऑब्जेक्ट्स होंगे तो आप कौन से वाले वर्ड्स यूज करोगे? और वाले, राइट? शॉर्टर, लॉन्गर, ओके? एस्ट वाले नहीं यूज करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू यूज लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट because there are two objects in the sentence. So I am going to use the word longer या फिर shorter. तो ये दो ऑप्शन तो हम नहीं यूज करेंगे. We are going to only see longer and shorter. तो एक बार पिक्चर देख लेते हैं. hammer 2 के बारे में बात की है, right? So hammer 2 is, if you can see, hammer 2 और hammer 3 को कंपेयर किया है, two objects को कंपेयर किया है. So I will say hammer 2 is longer than hammer 3. यहाँ पे longest will be a wrong answer. Okay. So I will click on the option longer because there are two objects. ठीक है. Now let us see the next question. Now
if you see here there are children, right? 4 children हैं, Jaya, Deepti, Ekta and Arav. Okay, now the first question is Ekta is dash than Arav. now ये बताओ बच्चों, इस सेंटेंस में कितने लोगों के बारे में पूछा है? how many children are there in this sentence? 2 children, right? Ekta and Arav. so हम कौन से words use कर सकते हैं? here we are talking about height. Please read the question. Compare the height. तो height compare कर रहे हैं. So which are the words that we will use for height? Yes, we will use taller, shorter, tallest, shortest. Okay? But now in this sentence there are only 2 children, Ekta and Arav. So we will use either we will use taller या फिर हम यूज करेंगे shorter. We will not use tallest and shortest. Okay? So what will be the answer? Longer, shorter, tallest या taller? Tallest नहीं यूज करेंगे. So the answer is taller because Ekta is taller than Arav. If you can see in the picture, है ना, एकता बड़ी है ना आरव से. So एकता is taller than Arav. Tallest तो खराब लगता है. एकता is tallest than Arav. That is wrong. Okay, now see, Deepti is dash than Jaya. So this is Deepti and this is Jaya. So what am I going to use? Deepti छोटी है, so shortest use करेंगे या shorter use करेंगे? Tell me. Yes, very good. We will use shorter, not shortest. Why? Because there are 2 children we are comparing, Deepti and Jaya in the same sentence. एक ही sentence में 2 लोगों के नाम हैं. That is why I will use shorter, not shortest. Okay. Now next is Arav is taller than dash and dash. So 2 नाम अभी यहाँ पे हमें दिखाया है ना, एकता जया. So you have to see the picture बच्चों. ठीक है, ये आरव है. Now I have to see कि इसमें से कौन कौन आरव से छोटा है. Can you tell me? See the picture. Yes, एकता तो आरव से tall है. She is taller. कौन बचा? जया एंड दीप्ति. सो दे आर शॉर्टर देन आरव. वेरी गुड. सो आरव इज टॉलर देन जया एंड दीप्ति. वेरी गुड चिल्ड्रन. नाउ सी हियर, क्वेश्चन में क्या दिया है? कंपेयर द विड्थ. जब हम विड्थ की बात करते हैं, व्हेन आई टॉक अबाउट विड्थ, WIDTH, कौन कौन से वर्ड्स आने चाहिए आपके दिमाग में? विच वर्ड्स? Wider, narrower, widest, narrowest. Very good. Now see the question. The yellow shirt is the dash and the blue shirt is the dash. Now यहाँ पे सिर्फ एक ही की बात हो रही है, right? The yellow shirt is the dash. So what can you say? Yellow shirt, दोनों से कंपेयर करेंगे तो yellow shirt क्या है? Narrowest, not narrower. ठीक है, narrowest. And the blue shirt is the widest. यहाँ पे सिर्फ हम एक ही की बात कर रहे हैं because यहाँ पे and है. Okay, so we are talking about yellow shirt अलग से and blue shirt अलग से. So the answer will be narrowest and widest. Okay, क्योंकि देखो shortest tallest होगा नहीं because it compares height. वाइडर टॉलेस्ट होगा नहीं, रॉन्ग हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट सी, अरेंज द एनिमल्स फ्रॉम शॉर्टेस्ट टू टॉलेस्ट. सो दिस इज इजी. शॉर्टेस्ट कौन है? माउस. उसके बाद कौन आएगा? डॉग एंड देन द जिराफ. सो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? रैट, डॉग, जिराफ. ओके, सो दिस वे चिल्ड्रन यू विल रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली कि हमें क्या कंपेयर करना है. अगर सेंटेंस में, इफ इन द सेंटेंस देर आर 2 थिंग्स, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, सो यू विल यूज द वर्ड्स नैरोअर, शॉर्टर, जो अर वाले हैं. ओके, एंड इफ देर इज ओनली 1 ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, देन यू विल यूज द वर्ड एस्ट वाले. ओके, लाइक वाइडेस्ट, लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट, जिसमें एस्ट आता है.
Okay, so always remember this. ठीक है, bye bye children, take care of yourselves.